Good morning, students. Today we will discuss the exercise of Unit 2 Sanskrit. I am Mr. Parikshit Rana. Welcomes you all in this YouTube channel English Sanskrit e-learning. So look here, the first question. धीव्राणां वचनं कीदृशम् आसीत्? धीव्राणां वचनं कीदृशम् आसीत्? The answer is कुलिशोपम. The third one, कुलिशोपम. So the answer is धीव्राणां वचनं कुलिशोपम आसीत्. Now question number 2. अन्य जलाशयं गन्तुं कः मत्स्यः निश्चयं करोति? So the answer is अन्यं जलाशयं गन्तुं अनागत विधाता मत्स्यः निश्चयं करोति. ये जो सेकंड आंसर है अनागत विधाता, वो यहाँ पर आएगा आंसर सेकंड. नाउ थर्ड. दिवरैः उक्तम् अद्य अस्माकं वृत्तिः. सबसे पहला जो आंसर है सज्जाता. क जो दिया है क, सज्जाता. सो सज्जाता इज द आंसर. द फोर्थ वन, अनागत विधाता डैश सह निष्क्रांतः. सो द आंसर इज जो लास्ट वन है यहाँ पर, द लास्ट, परिजनेन. सो अनागत विधाता परिजनेन सह निष्क्रांतः. मैंने पहले भी आपको बताया है कि ब्लैंक के बाद अगर सह वर्ड आए तो इंस्ट्रूमेंटल केस यानी तृतीय एक वचन ही यूज होती है, यानी तृतीय विभक्ति यूज होती है. तो सह मीन्स विथ, तो विथ के साथ परिजनेन यानी विथ फैमिली. तो जो ये लास्ट आंसर है परिजनेन, ये इसका फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है. नाउ द फिफ्थ वन. प्रत्युत्पन्नमतिः प्राह भविष्यात् अर्थे प्रमाण अभावात् कुत्र मया गंतव्यम. जो थर्ड आंसर दिया है गंतव्यम इज अ करेक्ट आंसर. नाउ द सिक्स्थ वन. अनागत विधाता प्राह अत्र क्षणमपि डैश न युक्तम. सो द आंसर इज क अवस्थातुम. ये जो पहला आंसर लिखा है, पहला ऑप्शन दिया है, वो उसका आंसर है. अनागत विधाता प्राह अत्र क्षणम अपि अवस्थातुम न युक्तम. Now the question number 2. Look here. First question. जलाशये के त्रयः मत्स्याः वसन्ति स्म. So you can write the answer from your textbook. जलाशये त्रयः मत्स्याः. You can write the name of those fish. प्रत्युत्पन्नमतिः, यद भविष्य and अनागत विधाता. So the answer is जलाशये अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमतिः यद भविष्य च इति त्रयः मत्स्याः वसन्ति स्म. Question number 2. अपरेद्युः धीव्रैः जलाशये किं क्षिप्तम्. What did the fisherman sprinkle in the water?
or spread in the water. तो अपरेद्युः धीव्रैः जलाशये किं क्षिप्तम्. In place of kim we will write jalam kshiptam. So jalam is a correct answer. So अपरेद्युः धीव्रैः जलाशये jalam kshiptam. Now the third one. कौ द्वौ मत्स्यो जलाशये एव स्थितो. कौ द्वौ मत्स्यो जलाशये एव स्थितो. कौन सी दो मछली जलाशय में रह गई. सो द आंसर इज प्रत्युत्पन्नमतिः यद् भविष्यः च इति द्वौ मत्स्यो जलाशये एव स्थितो. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. जालात् अपसारितः प्रत्युत्पन्नमतिः कीदृशं नीरं प्रविष्ट. कीदृशं नीरं प्रविष्ट. कैसे वाटर में चली गई प्रत्युत्पन्नमति. सो एस्केप फ्रॉम द नेट. प्रत्युत्पन्नमति एंटर इन डीप वाटर. तो यहां पर लिखा हुआ है कीदृशम नीरम, तो डीप वाटर. सो द संस्कृत मीनिंग ऑफ डीप वाटर इज गंभीरम नीरम. सो द आंसर इज जालात् अपसारितः प्रत्युत्पन्नमतिः गंभीरम नीरम प्रविष्टः. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5th. कः मत्स्यः धीव्रैः व्यापादितः. व्यापादितः मीन्स किल, यानी फिशरमैन किल whom. सो द आंसर इज यद् भविष्य नामा मत्स्यः धीव्रैः व्यापादितः. I repeat, यद् भविष्य नामा मत्स्यः धीव्रैः व्यापादितः. Now the next question is grammar. I will discuss grammar in another video. This krudant, samas, sandhi. I will make another video for only for grammar. Okay. So now the question number 8. आंग्ल भाषायाम उत्तरम लिखत. The आंग्ल भाषायाम उत्तरत means answer in English. What did fisherman think on seeing the lake? लेक को देखकर फिशरमैन ने क्या सोचा. So answer is in the first paragraph. अहो बहु मत्स्यो अयम हदः कदाचित् अपि न अस्माभिः अन्वेषितः तद अद्य आहार वृत्ति सज्जाता. But we have to write in English. So the answer is having seen the pond or lake, the fisherman thought that, oh, this pond is full of fish. We have never seen such type of pond. So the means of meal is ready. Okay. Now the second question. What did fish tell one another on listening fisherman's conversation? फिशरमैन की बात सुनकर फिश आपस में क्या बात करने लगी. अंदर अंदर वो सब क्या बात करने लगी. सो द आंसर is in your textbook. First of all, I am going to read in Sanskrit and I will translate it.
सो अथ तेषां तत्कुलिशोपम वचनम समाकर्ण्य मत्स्याः परस्परं प्राहु. So having listened the statement of fishermen like a thunderbolt, all the fish talk to each other. क्या बात की इन लोगों ने? श्रुतोऽयं धीवरः आलापः अधुना अस्माभिः किं कर्तव्यम्? Have you listened the conversation of fishermen? What can we do now? तो इतनी बात इन लोगों ने की. So having listened the statement of fishermen like a thunderbolt, all the fish talk to each other. That have you listened the conversation of fishermen? Now what we can do? Okay. Now the third one. What was the opinion of Anagat Vidhata? The answer is in the next paragraph of your textbook. This is the statement of Anagat Vidhata. I am going to read in the textbook. Anagat Vidhata nama matsyah praha नूनम प्रभात समये धीवराः अत्र आगम्य मत्स्य संशयं करिष्यन्ति इति मम मनसि वर्तते. तन्न युक्तं साम्प्रतं क्षणमपि अत्र अवस्थातुम् अस्माभिः रात्रौ एव किंचितं समीपं सरः गंतव्यम. सो हमें इसका ट्रांसलेशन लिखना है. दिस इज द आंसर इन संस्कृत. नाउ इन इंग्लिश. So Anagat Vidhata said, so really in the morning the fisherman will come here and kill all the fish. So we should not live here at any moment. We should go to another lake during the night. So these are the statement of Anagat Vidhata. Now the fourth question. What did Pratyutpannamati give the idea to go another lake? दूसरे लेक में जाने की जो बात हुई उसके बारे में प्रत्युत्पन्नमति के क्या विचार है? सो प्रत्युत्पन्नमति ही प्राह भविष्यात् अर्थे प्रमाण अभावात् कुत्र मया गंतव्यम् तद उत्पन्ने यथा कार्यं तद अनुष्ठेयम् तथा च उक्तम उत्पन्नम आपदम यस्तु समाद्यते स बुद्धिमान. Now the answer in English, and we have to write only in English. So without the Pratyutpannamati said, or this is the idea of Pratyutpannamati, that without the due to the lack of evidence for future, where should we go or where I have to go? भविष्य का कोई प्रमाण ही नहीं है तो हम कहां पर जाएं? So work should be done according to situation, and the person who face the difficulty which is occur is a intelligent person. Okay. Now the next one. What does Yad Bhavishya believe about leaving the lake? अब यद भविष्य का क्या मानना है? तो यद भविष्य उक्तम धीवराणां वचन मात्रेण पितृ पैतामहिकस्य जलाशयस्य त्यागः न युज्यते. यदि आयु क्षयो अस्ति तदा अन्यत्र गतानाम् अपि मृत्युः भविष्यति. So what he said? Yad Bhavishya explained that Yad Bhavishya said that only by the words of fishermen we should not abandon the pond of our ancestors, our forefathers. If यदि आयु क्षयो अस्ति तदा अन्यत्र गतानाम् अपि मृत्यु भविष्यति. If the death will come, it will come definitely elsewhere. अगर मृत्यु आनी ही होगी तो वो कहीं पर भी आके रहेगी. एंड उक्तम च यद भावी न तद अभावी च तद अन्यथा इति चिंता विसग्नो अगधः किम न पीयते.
So why are you not taking the medicine which destroy the worries? Why are you not taking the medicine which destroy the poison which is in the form of worries? So this is the opinion of यद भविष्य। उसका कहना था कि अगर आप दूसरी जगह जाओगे, अगर मृत्यु आने वाली ही होगी और आप कहीं पे भी चले जाओ तो अभी मृत्यु आके ही रहेगी। तो वो ऐसा कह रहे हैं कि तुम ऐसी दवाई क्यों नहीं लेते कि जो ये चिंता रूपी पॉइजन का नाश करे। दिस इज द ओपिनियन ऑफ यद भविष्य। नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी इज गिवन इन द इंट्रोडक्शन, लास्ट पैराग्राफ। लुक हियर। Last paragraph of introduction. Unit number 2, introduction of unit number 2, last paragraph. You can write from here. A man should think remedy for forthcoming difficulties in advance, and he should intellectually find out the way when he is in trouble. So this is the message of this unit or last question. The remaining exercise we will discuss in another video. Thank you very much for watching this video.